हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम घूमने के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे जाएंगे कोई प्लानिंग नहीं की थी, बस संडे का दिन था, अचानक प्रोग्राम बन गया कि सिटी सेंटर जाना है। तो वैसे तो सारा ही खूबसूरत है, मगर वहाँ पे कौन कौन सी जगह पे जाएंगे तो चलिए देखते हैं। अच्छा, तो हम पहुंच चुके हैं फ्लिंडर्स स्टेशन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और सिटी में जब भी जाओ क्राउड तो हमेशा रहता ही है। तो हम यहाँ से जो है ना ब्रिज को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। ये है यारा रिवर जो बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे जो है ना टूरिस्ट बहुत आते हैं, क्योंकि मेलबर्न जो है ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट लिवेबल सिटी है। इवन ऑस्ट्रेलिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 10 लिवेबल सिटी हैं उनमें से एक है। आप जब भी कभी बाहर घूमने जाएं तो मेलबर्न ज़रूर घूमने आइएगा। यहाँ पे हम पहले भी आ चुके हैं, मगर बोट में कभी भी नहीं बैठे, आज फर्स्ट टाइम बैठेंगे और यारा रिवर की सैर करेंगे। और यहाँ पे टिकट्स ले रहे हैं और टिकट्स कितने की थी, एक फैमिली की टिकट $90 से अबव थी, शायद 92 या 95, ठीक है ना। तो फैमिली में 3 लोग हों या 4 लोग हों तो सेम प्राइस थी, और अगर 2 फैमिली एक साथ जाती हैं तो आपको टिकट पड़ेगी $150 की। तो ये ऑप्शन अच्छा था। ये जो सामने वाइट कलर की क्रूज़ नज़र आ रही है, हम इसमें जाएंगे। अच्छा, मुझे पहले लगा ये जो बड़ी शिप है हम इस पे चढ़ने वाले हैं, तो ऐसा नहीं था। जब यहाँ से जा रहे थे तब पता चला कि इसमें नहीं, हम दूसरी वाली में जा रहे हैं। हम बैठ चुके हैं, मैं विंडो साइड पे बैठी हूँ और यहाँ से जो है ना बहुत ठंडी हवा आ रही है। विंडो खुली हुई थी, मैंने बंद नहीं की थी। तो यहाँ पे जो है ना जितने भी ब्रिज वगैरह आएंगे उनकी हाइट वगैरह, उनकी इंफॉर्मेशन और सराउंडिंग में जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और तो चलें आप भी इंजॉय करें इस वीडियो को। Now safety is most important on my boat, so life jackets to the right, to the left, and some in the cupboards at the back as well. On the back deck we have got 2 life rings and they are to be used in case of a man overboard situation. So if you see anybody in the water and they are struggling, please alert us as quickly as you can. And there is one fire bucket at the back deck. I do not want any fires on board, so if you are a smoker like myself, please feel free to go out on the back deck and smoke to your heart's content. Now we will be passing under 3 very low bridges, so when you hear the horn and if you happen to be on the back deck, just look forward and duck, because we do not want you to hit the bridges with your head, otherwise you'll have to pay for the new paint job. Now, and in case of emergency stations, if I call emergency stations, all you need to do is come back, sit on your chairs and follow the instructions. As you can appreciate, it's really difficult to handle people in panic. So let me do the panicking and you enjoy this relaxing cruise. Now, the first bridge to span across the Yarra River is right in front of us, the Sandridge Rail Bridge. It is not a railway bridge anymore, it's a pedestrian bridge now. Well, it was the part of first railway line constructed anywhere in Australia. So this railway line started from Sandridge Pier to the Flinders train station and brought in a lot of immigrants for over 100 years. So you can see the history of immigration into Melbourne just on top of the bridge. Now that's the first low bridge that I need to pass under, and south the horn. Right now the tide is pretty good, it's not that high, so we should be fine. Now Queen's Bridge, it was built in 1881 meter. Now on our right hand side you can see some ship post, mast, red, yellow, green color boys. And the reason they are here because this was the first port of Melbourne. So back in 1835, 2 ships were from Tasmania, Enterprise and Rebecca, landed on the banks of Yarra River. And there were 2 gentlemen on it who are pretty much responsible for this city to be John Batman and John Pascoe Faulkner. So John Batman, he started this settlement, probably the only major roadway that runs through middle of casino on our left hand side.
expansion of 1920s. So we were kind of generating a lot of jobs everywhere. So for example, in Sydney, we built iconic Sydney. I need to take precisely the middle of the bridge, so not to hit it. And the Alright, so as we are safely going past Spencer Street Bridge, I really want you to have a good look on the pillars underneath the Grand Plaza Hotel here on our right hand side. So that is the highest flood level Yarra River ever got to. So approximately 110 years ago, Yarra River flood did a lot. So imagine where we started this cruise from, Princess Bridge, was completely submerged in water during the last major floods. On our left hand side, Melbourne Exhibition Centre, the biggest single span room anywhere in the southern hemisphere. In same place, Belfast, Ireland, as a Titanic. But as you can see, she's still floating, so she has had much better maritime career. She's still serving the city of Melbourne as a maritime museum. So I highly recommend it that you go on there on a beautiful sunny day like this, and just to have a look at how they used to transport goods back in the day of sailing ships. The next bridge in front of us is known as the Yarra Bridge. It is the newest addition of bridges to the river, and it is nicknamed as a Seafarer's Bridge as well because it is the warp space created anywhere in the world during the gold rush era. So all these bars, cafes and restaurants on our left hand side used to be cargo sheds, and the cargo back in those days was gold and gold. This crane on our right hand side is heritage listed, just to remind us that how we used to transport goods back in the day here. Now, seafarer residences are coming up, and from what I've heard that they are affordable accommodation for people like me. However, the minimum price to buy one apartment in there is going to be close to $800,000. So I have no clue what affordable means. Next bridge in front of us is known as Charles Grimes Bridge, and we do not like Charles Grimes at all here in Melbourne. So that's why we have built an ugly looking bridge after him. The reason the entire landscape around this area so that fish could get stuck in it during the high tides. Now we have entered the newest precinct of Melbourne, and it is known as Dockland. So what do we see here first? Some buildings. So first one, the red, yellow, bluish in color, is designed of the theme of a Rubik's Cube. Next two white ones are supposed to look like cruise liners. And the last two, these black ones with a tail looking thing of top fin looking thing, that is designed of the theme of a whale diving down in ocean with her tail sticking out on top. अच्छा, यहाँ पे हम ना बाहर निकल आए हैं यहाँ से व्यू देखने के लिए। बहुत प्यारा लग रहा था, वीडियो में इतना नहीं लग रहा मगर रियल में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और इतनी ठंडी हवा लग रही थी। जब ना बहुत ठंड लगने लगी तो फिर हम वापस अंदर चले गए थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि इसके अलावा हम कहाँ कहाँ घूमने गए थे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।